Welcome to my channel, my target 100%. I think all of you must have seen my last videos. So you must keep your habit to do something everyday work in systematic, disciplined manner. Because whatever you will do, it needs practice. So everything depends upon your regular practice. Regularity, sincerity, and systematic manner makes you. Anyway, today's topic is work, energy and power. Work, energy and power. We have to discuss one by one. Work. First one is work. So it is very common word. We are very much familiar with this term. We are using the term. In everyday life, the term work is considered to be a synonym of effort. We can say it is effort, toil or energy spent. But the physical meaning of this term is entirely different from the meaning in our day-to-day life. Okay? In our daily life, work is described any physical or mental activity. But in physics, that meaning is something different. How it is different? Let us discuss some example. A person carrying some luggage on his head and walking in the horizontal direction. We are thinking he is doing work, but he is not doing work. A person holding a suitcase and waiting for the train in platform. You are thinking he is doing work, but he is not doing work. Whenever you want to break that wall, you are applying force. At that time, you are not doing work. Fan is rotating in a circular path. Planet revolves around the sun. Satellite revolves around the sun. So in that case, you are not doing work. Suppose हम बोलेंगे विश्वजीत काल एक हाथी को उठा के फेंक दिया. It is not possible. So he is trying, but he failed, not doing work. So these are the common examples. You are thinking that we are doing work. Work means effort, labor. You are spending some energy, but there is no work done. So in the last classes in unit 2, motion in 2-dimension vector chapter, you have read dot product of vectors, cross product of vectors. So dot product of two vectors gives the result of actual meaning of a definition of the work done. A dot B, A vector dot B vector is equal to AB cos theta. Okay. Similarly, work done. Work is equal to F vector dot S vector, that is Fs cos theta. Now try to understand the physical meaning of work. Work is said to be done when force is applied and there is some displacement of the body from one point to another, except perpendicular to the direction of the force. Why? In perpendicular direction, you are getting the cos theta, cos 90, I will tell 0. So in that case, what done is 0. Okay. Suppose you are preparing some work. You are writing. All of you are sitting in the chair. You are writing. I am teaching. So we are not doing some work, because for work, you see, in the direction of force. Suppose this is one body A. You are applying force. This is applied force or external force. After applying force, body is here. The position is B. From center to center you give. This is the S. So what are the factors on which the work done depends? External force or applied force and displacement. Now you are sitting, there is no displacement and you are not applying force. So there is no work done. I am teaching, my position is not changing, so there is no work done. So what are the factors on which the work done depends?
one is force, another is distance, okay, covered by the body. Then you can say that in the direction work is said to be done when force is applied on the body and there is some displacement or through a certain distance in the direction of the applied force it happens. So work, it is the formula. So W is equal to, at least you remember, W is equal to Fs. W is equal to Fs. So formula is equal to, now definition, easy definition, W is equal to F dot S, dot product of force and displacement. Definition and meaning I have already told. Then formula, after definition it is formula. Then nature it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Okay. Units, joule, SI unit, org, CGS unit. Okay. Dimension, Fs MLT minus 2 into L, so ML square T minus 2. It is the dimension of work done. Then types of work. What are the types? Types of work. What are the types of work? Types of work. Positive work done, negative work done, zero work done. So actually, when body moves, suppose it is the circle, it is the center, it is the radius, body is here, body here. Okay. So what happens? F, it is the velocity, and you are covering some distance. Okay. With respect to this one, what will happen? What you are getting? Okay. What you are getting? So theta is 90 degree. That is theta is 90 degree. It is the centripetal force, center, and that one is, this one is 90 degree. When there is 90 degree between force and displacement, cos 90 is 0, work done is 0. Let us give some example one by one. So work done may be positive, नेगेटिव और जीरो वर्क डन. जीरो वर्क डन जितना एग्जाम्पल बताए वो सब जीरो वर्क डन का याद रखना. व्हेन इलेक्ट्रॉन और एनी सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करता है ना, वहाँ वर्क डन जीरो होता है, याद रखना. ओके. सो नाउ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, डब्ल्यू थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री तक, बिलो 90 डिग्री तक पॉजिटिव, सो पॉजिटिव वर्क डन. क्यों ना? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ये कितना हुआ? एफ एस कॉस थीटा. वर्क डन कौन कौन फैक्टर ऑफ डिपेंड किया? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, थीटा. तो थीटा अगर पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही है, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. कम टू पॉइंट. नाउ what are the common examples of positive work done? When a body falls freely under the action of gravity. Okay. When a lawn roller is pulled by applying a force along the handle at an acute angle. Okay. Acute angle, you can better understand this one. Suppose this is one body, this is another body, and this is the, okay, F, it is theta, and this one S, F cos theta. It is positive work done when acute angle. Okay. Then what happens? This one, when this one, suppose this is the body you are applying, this one is theta, and okay, here is F, opposite direction of F cos theta. Here is S, so it is negative work done. It is negative work done. It is zero work done. Again, when a gas filled in a cylinder fitted with a movable piston,
When spring is stretched, these are the common examples of positive work done. पूरा उल्टा कर दो, when a body is thrown off, आप ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी जब बॉडी गिरता है ना, तो यहाँ बॉडी सपोज यहाँ से ये बॉडी यहाँ है, बॉडी गिरा तो ए इज इक्वल टू प्लस जी, यहाँ से बॉडी फेंक रहे हो, यहाँ फेंक ए इज इक्वल टू माइनस जी, यहाँ नेगेटिव वर्क डन. व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन ऑफ, व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मोशन इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. व्हेन यू आर साइकिलिंग ए साइकिल, पेडलिंग ए साइकिल, ओके, बट यू आर गिविंग अप्लाइड फोर्स और ब्रेक्स. जब कभी कुछ रास्ता अलग हो जाता है, अच्छा नहीं है, तो ब्रेक मारते हो, माने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, अपोजिंग फोर्स होता है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क डन. व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड क्लोजर टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्क डन. ओके, देन कम टू पॉइंट. These are the common examples of positive, negative or zero work done. Okay, so work done by a constant force. Okay, what I show, that is work done by constant force. Work done by variable force, work done by constant force. Okay, so work done by constant force. Work done by constant force. Work done by a constant force. बॉडी यहाँ था, पोजीशन यहाँ, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स बॉडी यहाँ आया, तो ये सरफेस में था, तो कितना हुआ, डिस्टेंस इतना कवर किया, तो ये एफ हुआ, तो ये हुआ, तो ये थीटा हुआ, एफ कॉस थीटा हुआ. सिंपल दिस वन. बट इफ ये सरफेस है, बॉडी यहाँ है, फोर्स यहाँ अप्लाई किए, तो बॉडी क्या हुआ, यहाँ खींच के ले रहा है, ए टू बी हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, एस. सो इट इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज डन. बट व्हाट हैपन्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन मेथड. सो work done by constant force, work done by variable force, work done by variable force कितना होगा, W इज इक्वल टू कितना हुआ, Fs. इसको मिटा देते हैं, dW इज इक्वल टू Fds. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू dW का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से W, तो W हुआ, F कांस्टेंट, तो लाए इधर, तो F यहाँ कर दो, F ds कितना हुआ ना, S1 to S2. दिस इज द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. International units of work, 1 kg meter is equal to 9.8 joule, 1 gram centimeter 980 erg. Other units of work, they are analog with the energy. Electron volt, mega electron volt, kWh, kilowatt hour, calorie, these are the other units of work. Similarly, you can say, जब स्ट्रेचिंग करते हो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेस्ड होता है वर्क डन नेगेटिव. सो एनर्जी तुम लोग का बहुत थोड़ा थोड़ा है. एनर्जी, whenever you are doing some work, you energy spend some energy. Energy is the capacity of the body to do work. There are different types of energy in our daily life, but in physics you will use the mechanical energy. Mechanical energy means total energy, the sum of kinetic energy and potential energy. Okay, so one is kinetic energy, another is potential energy. Kinetic energy, it is the energy possessed by the body by virtue of its motion of the body. मोशन, जहाँ बॉडी का मोशन है वो काइनेटिक एनर्जी हो गया. तो मैकेनिकल एनर्जी आप जो यूज किए, मैकेनिकल एनर्जी आप यहाँ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी में
एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कोई कोई इके ऐसे लिखता है और कोई के ई लिखता है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कोई ईपी लिखता है और कोई पीई लिखता है। काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन। कौन कौन फैक्टर ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड फैक्टर डिपेंड्स मास वेलोसिटी। ओके, तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। और सब फैक्टर वार्डन का जो था काइनेटिक एनर्जी का यूनिट्स जूल एंड अर्क, डायमेंशन ml² t-2, बस ऐसे उसका जो था वही, क्योंकि तीनों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डेफिनेशन यहाँ क्या हो जाएगा? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, पोजीशन, कंडीशन और कॉन्फिगरेशन, बस ये हुआ डेफिनेशन। तो फैक्टर कौन कौन फैक्टर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है डिपेंड फैक्टर कौन कौन? डिपेंड फैक्टर मास, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जी हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हो गया फैक्टर। इसका क्या है फॉर्मूला ना? mgh हो गया। यहाँ एक चीज़ है, सपोज तुम भूल गए डेफिनेशन, ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द एनर्जी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द बॉडी। तीनों स्केलर है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जनरली 3 टाइप्स का है, हम 2 टाइप्स का यूज करते हैं। इलास्टिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपको यूज कर रहे हो, ये जो ईपी बोलते हो mgh, जनरली ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी सपोज ये आर सरफेस, बॉडी यहाँ था, यहाँ से आ रहा है, तो कितना हाइट हुआ? h। तो बॉडी जब यहाँ गिरा तो एक्टिंग कर रहा है g, तो फोर्स कितना हुआ? W इज इक्वल टू Fs। ये फोर्स जो हुआ वेट, ये हो गया mg, s हो गया h, बस इट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ h इज इक्वल टू 0, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0। ओके, देन कम टू पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी समझे? जो स्प्रिंग स्ट्रेच करते हो बोले, और आरो धनु तीर मारते हो ना स्ट्रेच करके, उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी, कांथ घंटा टिक 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 आवाज़ करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, उसका चलते ही हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बहुत मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सपोज ये फैन रोटेटिंग, इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग, तो कौन सा एनर्जी हुआ? स्विच ऑन किए ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिव्स टू लाइट एनर्जी। रूम हीटर, वाटर हीटर, जो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देन कम टू पॉइंट पावर। वेरी इजी टॉपिक, पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम इज पावर। ओके, P is equal to W by T. You are telling that is P is equal to W by T. Clear? You can take that work done by time, work done by time. But question is power. It is also scalar quantity. The rate of doing work, power means P work done
by time taken, P is equal to W by T, F S by T, F को रखो S by T अगर करेंगे तो हो गया F V, तो ये भी मिल जाता है F V cos थीटा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा इज इक्वल टू 0, so P is equal to F V. Another form, it is the product of force and velocity of the body. So power, the SI unit what means, देखो P is equal to W by T, 1 वाट। आप देखे होंगे बॉल में नहीं लिखा होता है पावर इतना वाट का, वो जो कूलर में लिखा होता है फ्रिज इतना वाट का इलेक्ट्रिक पावर, वही पावर होता है किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये सब लिखा होता है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। इफ यू आर डूइंग वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन वी कैन से इट इज 1 power of watt of 1 power. Okay, so another form you can say, that is, I think these are given or not in your syllabus. Okay, anyway, this much you remember, it is a scalar quantity, dimension इसका हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन निकालो। डायमेंशन कितना हो जाएगा, वाट डन का कितना हुआ, ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t, सो ml स्क्वायर t माइनस 3। ओके, इन रिलेटेड विथ वर्क एंड एनर्जी, देयर इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम you can say work done by the displacing a body is equal to the change in its kinetic energy. Work done is equal to half mv square minus half me square. If you are writing this one, it is EKF, final kinetic energy, minus EKI, initial kinetic energy. So it is known as work energy theorem. And in case of work done, suppose रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएगा, W इज इक्वल टू F डॉट S आप लिखते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से आप ऐसे लिख सकते हो I कैप Fx, J कैप Fy, K कैप Fz, S भी ऐसे करेंगे I कैप Sx प्लस J कैप Sy प्लस K कैप Sz. So you will get what will I cap dot 1, other factors are 0. So similarly you will get the value as per the question. जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो। ओके, जैसे कि हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हुआ, सपोज ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू ए 4.0 मीटर अक्रॉस द फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। Again, a box is pushed through a 4.0 meter across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by the applied force and resisting force? You just see. Applied force हुआ तो in the direction of force हुआ तो positive work done हुआ, opposing force हुआ means resistive force हुआ तो negative work done हुआ। तो in the direction of force में आपको थीटा को 0 लेना है। तो क्या क्या दिया हुआ, पहले देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, बहुत इजी है। क्या पूछा, एक बॉक्स था, बॉक्स में आप फोर्स अप्लाई कितना किए, 100 न्यूटन। सपोज यहाँ एक बॉक्स है, यू आर अप्लाइंग फोर्स, हाउ मच फोर्स इज गिवन, 100 न्यूटन। F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। बॉडी यहाँ था, फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी यहाँ आ गया। कितना डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ S, ये डिस्टेंस हुआ 4 मीटर। ओके, सो हियर यू सी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, लेकिन एंगल नहीं दिया, बी केयरफुल। सो एंगल नहीं दिया हुआ, फिर भी याद रखना ये जो थीटा हुआ ना यहाँ, ये 0 डिग्री। सो W इज इक्वल टू F S cos थीटा, थीटा मीन्स 0, तो F S हो गया cos 0 1,
तो F कितना हुआ 100 न्यूटन, ये SI ये भी SI, तो 100 इंटू 4 न्यूटन मीटर, तो कितना हुआ 400 जूल। बट यहाँ जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा इन द ऑपोजिट, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, सो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा मीन्स कॉस एफ एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना हुआ -1, कॉस 01 कॉस 180 डिग्री -1, तो एफ एस कितना हो गया, बस वही हुआ -400 जूल। आंसर दिस इज द one is 400 joule, another is -400 joule. Then come to point another work done by a variable force numerical. Okay, all of you right? Then come to point this one. Question is a force F is equal to 10 plus 0.50 x. Okay, it is this one acts a force F, this one 10 plus 0.50 x acts on a particle in x direction. x डायरेक्शन में इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है पार्टिकल का ऊपर। F इज इन न्यूटन, x इज इन मीटर। F है न्यूटन में है, x जो डिस्टेंस कवर किया वो मीटर में है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट x 0 to x इज इक्वल टू 2 मीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व बाय इंटीग्रेशन मेथड। ओके, सो नाउ I have told W is equal to Fs, dW is equal to integration of x1 और s1 to s2 और x1 to x2, तो W is equal to FdS लेना है। सो dW कैसे करना है, नया सॉल्यूशन dW is equal to Fdx, तो F कितना हुआ ना 10 plus 0.50 x into dx, इंटीग्रेशन तो निकालो 10 dx इंटीग्रेशन प्लस 0.50 x dx, इसको मिटा देता हूँ, प्रॉब्लम करेगा। ओके, देन यू मल्टीप्लाई, क्या क्या दिया हुआ यहाँ से कितना कितना x 0 to x2, देन इसमें कर दो 0 to 2 x 0 to 2, यहाँ कितना हुआ 10 dx। सो dw का इंटीग्रेशन यहाँ से w हो गया 10, यहाँ हो गया dx का इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस यहाँ 0.50 x dx 0 to 2, सो 10 x का 0 dx का इंटीग्रेशन x 0 to 2, 0 लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये कितना है 0.50 रखे x ds का x²/2, ये कितना है 0 to 2, तो 10 यहाँ कितना हो गया ये 10 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.50, ये कितना हुआ 2² 4/2 माइनस 0। अभी देखो 10 into 2 प्लस इसको कर दो 50/100 इंटू ये हो गया 2 50 कट्टा। ओके, सो कितना हुआ 20 प्लस ये कितना हो गया 1, सो 21 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू। You have to solve in this way number of problems. Okay, in next class we have to solve some numerical problems on kinetic energy, potential energy and power. Thank you, have a good day.